mechanism of breathing first. When we talk about mechanism of breathing, as we said, that there has to be two things that you have to remember. Firstly, the pressure is inversely proportional to the volume, that is your Boyle's law. Secondly, gas will always flow from higher pressure to lower pressure, basic chemistry. Forceful breathing is done with the help of abdominal मसल्स. ठीक है ना. जब हम ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेलेशन का. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेलेशन, सिनेरियो क्या हो जाता है बेटा? How exactly there will be intake of air? Intake of air will only be possible if the intrapleural pressure is less than the atmospheric pressure. अगर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम रहेगा तो ही हवा जो है वो बाहर से अंदर जाएगी. अब एक चीज समझने का कोशिश करो. इफ आई हैव दिस अंदर जाएगा, ठीक है. तो हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरा लंग्स का प्रेशर जो है वो कम रहे? तो लंग्स का प्रेशर तब कम रहेगा, वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. So I need to increase the volume of lungs. How do I go about increasing the volume of lungs? तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आएंगे. हमारे रिब्स समझने का कोशिश करो ऐसे है, ठीक है. सो नाउ व्हेन द रिब्स आर लाइक दिस, okay, I will show you. You have your ribs to be like this. So now when ribs are like this at the sideways, when the intercostal muscle contracts, these ribs will go outside. It will come like this. So when they're coming out like this, automatically, मेरा जो lateral volume रहेगा वो increase होगा कुछ इस प्रकार से. Dorsoventrally it will increase. ठीक है. Dorsoventral volume जो है वो increase हो जाएगा. Of dorsoventral will increase. Okay, and simultaneously you have phrenic muscle, which is nothing but diaphragm muscles will also contract. So मेरा diaphragm जो ऐसे था, it will contract and become straight. So when it is becoming straight, automatically what happens is they go down and become flattened, and thus the anterior lateral or anterior posterior volume will also increase. So both of them will together be responsible for increasing the volume of your lungs. And as soon as the volume is increasing, the pressure decreases. Thus, you have intake of air, which is easily being done. All right. Now, here in this case, for muscle contraction to occur, you will require ATP, and because of which inhalation is considered to be as an active process. Inhalation is called to be as active process. Exhalation क्या होगा कि हवा अंदर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे इंटरप्लूरल प्रेशर यानी लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाएगा. ये सेंसेशन आते ही ऑटोमेटिकली इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज डायफ्राम दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स हो जाने की वजह से रिब्स वापस अपने जगह पे आ जाएगा, और जो डायफ्राम फ्लैट था वो वापस कॉनकेव शेप का हो जाएगा या डोम शेप का हो जाएगा. तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीजेस, एंड thus there will be exhalation of air. That's how you have inhalation and exhalation taken place. Are we clear up till here? Now, this particular thing is called as breathing. Normal adults have 12 to 14 breath per minute. It breathes 12 to 16 times per minute. Whereas when we talk about in infants, the breathing rate is way higher. It is somewhere around 44 breaths per minute. All right. How can we measure breathing rate in an individual? So for that reason, we have a machine which is called as spirometer, which will help in measuring the breathing rate in an individual. All right. Now, when we talk about this breathing rate, is breathing rate को generally calculate किया जाता है with the help of pulmonary volumes and capacities. Now, how exactly do we understand this pulmonary volumes and capacities? Let me just make things a little bit more simpler for you. Just give me 1 minute. Okay. See, what happens basically is, okay, if suppose this is your lungs, if supposedly this is your lung that we have, let's change the color. If suppose this is the lung that we have,
if suppose this is the lung that we have, ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, that normal inhalation and exhalation what we have will be identified to be as tidal volume. So this what you observe over here that is getting increased will be called as tidal volume, जो generally sorry जो generally 500 ml का होता है. And if we are taking up 12 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में अगर हम 12 बारी रेस्पायर कर रहे हैं तो समवेयर अराउंड 6 सॉरी हाँ या 6 liters of air is being taken in and out per minute. वहीं पे there are sometimes where we are forcefully taking extra air inside. So there is extra air which has been inhaled. This extra air which is getting inhaled inside the lungs, and the lungs have this much of volume that is saved in it for the emergency condition, and this will be identified as inspiratory reserved volume, जो generally 2500 to 3000 ml का होता है. So this becomes your inspiratory reserved volume. All right. Now, you also have something called as expiratory reserved volume, which is nothing but we will definitely expire. जब हम forcefully expire करते हैं, जब हम extra air exhale कर देते हैं, there is some air which gets exhaled. Now this some air which is getting exhaled, this some air which is getting exhaled is nothing but what we call it to be as, you identify this to be as, to identify this extra air that has been exhaled as expiratory reserve volume. Okay, if you want, you will this what we observe is called as expiratory reserve volume. And finally, what is left inside, which never goes out from the body, which is this region, this is called as a reserve or residual volume. Okay. So expiratory reserved volume when we talk about will be somewhere around 1000 to 1100 ml, that is expiratory reserved volume. और जो हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं वो 1100 से 1200 ml का हो सकता है. ठीक है, ये हो गए हमारे सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो जनरली मेजरेबल होते हैं बाय स्पाइरोमीटर. However, you have capacities as one more term which has been present. कैपेसिटी क्या होता है बेटा? जो जब एक से ज्यादा वॉल्यूम को हम क्लब कर देते हैं तो उसे हम कह देंगे कैपेसिटीज. तो सबसे पहले यू हैव इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? इट विल बी कॉम्बिनेशन. ये हमारा नॉर्मल लंग है, लेट्स से दिस ओवर हियर इज द नॉर्मल लंग दैट वी हैव. अरे यार, दिस ओवर हियर इज द नॉर्मल लंग दैट वी हैव. ये नॉर्मल लंग है, बराबर. अब इसमें हम एक्सेसिव एयर हवा भर रहे हैं, तो मैक्सिमम हवा हम कितना भर सकते हैं? दैट बिकम्स इट्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी व्हिच ब्रिंग्स अबाउट टू 3000 to 3500 ml. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज कितना हवा हमारे अंदर से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी व्हिच इज 15 to 1600. वाइटल कैपेसिटी इज जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी में कितना या हमारे लंग्स में कितना हवा होता है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारा उसमें आ जाएगा. सो दैट विल बी tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. So that will bring about to 3500 to 4500 ml, at 3.5 to 4.5 liters. Functional residual volume. Functional residual volume is कि जब हमारे बॉडी का लंग्स नॉर्मली फंक्शन करता है तब हमारे बॉडी में, तब हमारे लंग्स में कितना हवा भरा रहता है. सो दैट इज expiratory reserve volume plus reserve volume that gives you 2500. And total lung capacity is हमारे lungs के अंदर टोटल कितने एयर भरे जा सकते हैं. That becomes vital capacity plus residual volume, that is 5800 ml per minute. Okay. Now let's try to understand how exactly gaseous exchange takes place. Okay. Now when we talk about how exactly gaseous exchange takes place, what exactly do we have to do in this particular case?
सो